Hello, dear students. Can you hear me? Can you hear my voice clearly or not? Yes, Yes, sir, you yes, are sir. audible, sir. Please reply in the chat, not on the speaker. Students, if someone is requesting to join the meeting in the lobby, anyone can approve. Because if I'm delivering the lecture, it is I'm unable to pay attention on both things. So I need your help. Okay. All right. Let me share my screen and we start today's lecture for the meeting. Can you guys see the screen or not? My screen is visible or not? Why it is not Yes, sir, visible? it's visible. Maybe you have some internet problem, but my screen is on and it is visible to a lot of students. All right. Okay. Now, Umar Farooq, please add the students from the lobby. Am I not audible to everyone? Okay. If I'm not audible, then how you can say no, you are not audible? This is like a joke. Someone commented that no, you are not audible. That my chats are not working. Okay. Okay, let's start. Only 2 or 3 students are working hard to write a review paper. The others are very lazy and they are not even working. Hard work is something big and they are not even working. So the students who are doing assignments and getting ideas and sharing with me through emails and other ways, we will give them appreciation certificate, and 1 or 2, maybe 3 students will get the excellent student certificate, excellent student course of the student of the course. And it will be totally on the basis of your performance. We will not give favor to anyone. Okay, so today is day 3 and we will study about reading, evaluating, and organizing the literature. Literature means the published research articles that are available online on the websites of journals. Like these are the journal articles. How to understand published studies and build a structured review framework. So the lecture source for today's lecture source is scientific writing and publication skills. For these skills, we need 3 basic operations. First is reading the literature, that either we have idea of this study or not, this research. We have to see the 2 parts of the study, like we should have knowledge about it,
It should be related to our research topic which we are doing or we are studying, and we should study it critically. Like we should find the gaps, the issues, or the mistakes. So where we can raise the question that how it is possible, how it is not done in this research. So this is the reading and evaluating, judge the study quality and relevance. Then you have to find that is that study is relevant to your topic, what you are studying in your lab, in your MPhil, in your MS, in your PhD, or in your bachelor's thesis. What you are doing, is this paper research article is relevant, similar to that or not? And what is the quality? Has the author fulfilled all the requirements of a research paper? Like uh, did the he applied the methods, and he did different analysis to get the results. Does he explains the results in accurate manner or in not accurate manner? Uh, 𝙍𝙬𝙫𝙬 said that the screen is not being shown to her. I think you should leave and rejoin, because other students can see the screen and they have no problem with it. Can you listen me, 𝙍𝙬𝙫𝙬? I think you should leave the meeting and rejoin. It's really good. We have more than 70 students today. Okay. Um, and organize. How to organize the literature? The evidences, like the study they have provided, the analysis, and the other things that have been provided, are they fulfilling the criteria? And if they are fulfilling, then you have to make a separate folder, a file, and then from the folder you have to make a separate file for all kind of data, like for the methods, for the analysis, and for the other things related to a research paper. You have to make files and group them together and for the first further studies. So let's move to our next slide. What happened? Please turn off your mics. No one is allowed. Sir, you are not audible now. No, I'm audible. Sorry, I mistakenly closed my mic. Yes, sir. I think no. Yes, No. so Okay. that's fine. Okay. Please add the students from the lobby. Umar? Okay. So I was discussing about data extraction, that we should, what we should extract from the paper, we should know this.
like we have to extract the methods, results, research gaps, problems, pros and cons, and different things. And the quality, we should have knowledge to judge that either this paper's quality is enough for our review or not. So we should see this. And critical comparison, like we have uh, to compare different literatures. One, we should, if we are studying a paper, we should compare it with others that, according to other papers in good journal, it is showing of all the characteristics of a good paper, or just it is oh, wait a moment, there is some problem. Okay, the next is thematic. Or please turn off your mics, please. Students, you are not allowed to make the noise and turn on your mics. Otherwise, I will stop the meeting and leave. If you are not respecting the rules, then I think it is useless to teach. So the next, I will I was discussing about thematic organization, like group the studies logically, like for, because there are different research gap in a study, we should group them, the literature downloaded papers in form of the in form of the research gaps, like on the basis of research gap, on the basis of good results, on the basis of their stability, their applications, and blah blah. We can group them on many things. And literature matrix, then we should have to make a summary about this, our analysis, what we have um, gained from that papers. We will discuss it further in next slides. So how to read research papers efficiently? First of all, we have we should know that how to read a research paper. We should use a purpose-driven reading instead of reading every line. Uh, this is what I said in the start. So start with the abstract. First, we should see the title of paper, not the abstract. Title, in the title, we should see that either it is according to our requirement or not. And the second, we should study about the abstract, get the purpose and the main message, that what is said and what they have achieved, what they want to tell us, and why they did this study, this research. Identify the research question, what problem is being addressed, and then inspect figure and table. We should see the figures and table, that what kind of analysis they have did and what the results are showing. And then mark the key findings, that what are their major findings and what is their main selling point for this review article. Note the limitations. What are the weaknesses? What are the gaps? What are the problems they have faced in their research? And then return to the details. Read methods and discussions when needed. Methods and discussions are required at the time of writing the paper, but
for selecting the paper, the other things I have discussed before are the necessary things. And then skim, focus, extract, and reflect. This is a strategy. Uh, After reading with this strategy, it will save your time and improve your thinking ability, and you can find the paper fit to your requirement in seconds after reading it comprehensively. Fourth point is about recommending reading order: title and abstract. Understand the topic as I have discussed and about the abstract, and then conclusions. See the final takeaway first. Figures and tables, if they are available, we should see them, and results and discussion, what they have discussed in their results and methods, and the reference information are supplement references. We should see that what kind of references they have used or cited, because reference means a lot to a paper. If the references are not from good journals, not high ranked top tier journals, then the paper's quality is surely very, very poor. So we should not consider that paper. And then supplementary information is a file that is not available on the journal online on the display of the journal, but it is with the paper in the PDF form on the site. We can download by clicking it. So let me give a real-time glance from a research paper that how we should see these things. I'm closing this screen and going to share next screen. Can you see this screen with the papers, with the research paper from the JACS JACS? Okay. The questions will be taken at the end of the session, and let me know this, that how to see a research paper. First, as my research topic is about the photocatalysis and catalysis, so first I will see that is it related to the carbon dioxide reduction or not? It is related to the photocatalysis or not? So my topic is the metal organic framework, like MOF. So first of all, I will see this is also a very good journal in chemistry, Advanced Material Interfaces. Uh, so first of all, I see that is it containing the metal organic framework? And because the basic and main title is carbon dioxide photo reduction, the photo word must be there, and the carbon dioxide, and then metal organic framework. So I will see that this paper is good from the title, and this is the abstract. And in this paper, it is also the abstract is mentioned here. But I think this paper is not for CO2 reduction, but this is paper for carbon dioxide photo reduction. So here I will see that first they have mentioned a key challenge for photocatalytic CO2 reduction is the design and synthesis of photocatalyst with remarkable performance in visible light absorption, CO2 and electron coupled phototransfer. They have discussed two research gaps. So they are completing the criteria of our research topic, like they have discussed that it should be, they have started from the challenges. First is the design, and the other is its improvement of electron coupled photon transfer. So then the other thing, we should not see the
introduction here because it is so long. And then we should see the figures like they have um, issued the polyoxymetalates. Polyoxymetalate is also my topic, and the organic frameworks like this is the structure of MOF. From the figures, I can see that they have synthesis, some MOF like one NENU3 and NENU10, and then they have combined it with the different other things. And this is the table of their performance of CO2 reduction, that CO is converted into CO, H2 and CH4. Further, they have clearly elaborated the mechanism of study, this reaction mechanism. And from the references, I can see that they have references from chemical reviews, advanced materials, chemical society reviews. These journals like chemical review and the energy reviews and advanced science, they are top tier journals in the chemistry. Like they have a bet factor from 30 to 50 or 60. Journal of American Chemical Society, JACS, it is also very good. And Energy and Environmental Sciences, Acquainted is also a very good journal in chemistry. So their references are good. And here we can see the conclusion part of their search. Here in conclusion, we demonstrate a facial synthesis method that have synthesized a MOF and foam-based catalyst. So here we can see that what they have produced. So here they told that they have mm, uh, improved the charge transfer efficiency and the other things like they have told about the performance. So this is the real-time overview of a research paper. So I will move to back to slides. Okay. So I have come. The point four was results and discussion. Someone told that they did not understood. We should see that whether their results and discussions are fulfilling the requirements of our review or not. As because this is the thing to be studied later. First, we have to see the title, abstract, conclusion, and figures and references. What to extract from each study? Citation. If we are taking data from any paper, we should cite them, like author year and journal. Because today, in these days, we use EndNote, Mendeley, and some other software to cite them. We should not take this. We should only download the citation, and automatically it will convert in this form. Then objective, what the main purpose or the hypothesis of this study, that for what they carried out this study or this research. Then methods, what kind of methods they have applied, or they are based on reality or not. The key finding, what are the main results and what are the findings and conclusions in that paper. Performance metrics, like what is the performance of their study, what they have studied and what they have found. And then strength and limitation, what is strong and what is weak. What is like, as I have discussed about, we should see the pros and cons of that study, that research, that where they get problem, they faced problem, and where they get the remarkable things in their research. And the relevance, why does it matter for your review? We should see that why it is suitable for our review paper. From all these things, we can get the conclusion of the relevance, that is it okay or not okay. Here, evaluating the study quality and the reliability. Clear research question. Is the aim well defined? The aim of study, that why they have carried out the study, as I have shown you in paper, that they have clearly
mentioned that they are going to address these two challenges that they have discussed in the abstract. And methodological rigor are the methods appropriate and reproducible, that the method they have used can be repeatable, can we repeat in our lab, in our study, and through what sources we are doing our research, can we repeat them or not? Reproducible mean, can we redo that, redoable? So this is the main theme. And data quality, are the data sufficient and convincing, that their results and the data they have provide, is it uh, fulfilling our demand, and is it sufficient for a paper, or is it fulfilling the requirement of our review or not? Then control and comparisons. Is there meaningful benchmark? Benchmark is something extraordinary that they have found in their study. Like they have introduced something new and that give a very high efficiency, or it is very good in the real-time application. It is the benchmark. Benchmark is the thing that is leading all the previous studies, or uh, among the top 10 highest researches results. That things are called benchmark. Then interpretation are conclusions supported by evidence. In the conclusion part, what they have discussed, is it present in their data above in the results and discussion or not? The relevance, from all these 5 points, we can see that is it okay for our study or not? Comparing studies critically. A good review compares studies instead of only listening to them, listing them. First, agreement. What do multiple studies support? Because for review, we need to see the multiple papers, and we should see that what they are supporting. That in my research, the papers are supporting about the clean energy and the challenge is to produce clean energy. And then contradictions. Where do the results different from all the studies, where the results are different from one to another? Why? What is the reason? Maybe it is in the problem in the synthesis, in the methods, in the analysis, and where else? And then strengths. What are the good or the strongest parts of this each research? And then limitations. What weaknesses affect the interpretation? That what are the challenges, limitations, or gaps the researcher is facing, and it affecting their study? And the trend, what repeated pattern appears, that in different studies, what are the repeated things, that all maybe they could be challenges, they could be good results, they could be analysis, and they could be anything. And we should see that what is the thing that is most common in all the studies. Gaps, what is still missing from the literature, that in all the papers we have studied, that what is still missing, we should see this as well. Organizing the literature. Choose a structure that help the review tell a clear story. Thematic, group studies by ideas or topics. Like what kind of review we are writing? Thematic, that it should it should be combined different studies, ideas, or topics. That what kind of studies or topics are being trending in this field today. And then chronological, show how to field developed over time. That it is about that from start to today. That what kind of developments have been uh, development have been happened, which have developed this study and improved the performance, application, and some other good things. Methodological, which compare the different methods and techniques are being used, like from start to today, what kind of methods are being used, and what are the
how they are developing and improving the results in this study. And application-based performance, like all the studies that give good performance and their applications would be used in the industry or the real life. We can also write a review on this by organizing literature in this way. In this way. So the best choice is combine structure, type when needed. When uh, when we are going to write a paper, we should first make a clear concept in our mind that what we are going to do, and according to that, we should organize the literature. At the number 9. Number 9 is literature analysis matrix. That how we should see that this literature is suitable or not. Metrics mean that its quality, like its impact factor, and what who is the author and what is the credibility of author. So these things are elaborated by these author and year, that in which year this is published, in topic or system, that what is the topic of the study and what is the method applied and what are the finding and results, what are the gaps and what are the useful things. Like they have here the example of different studies is given, so we can characterize according to this from these things, and then create the matrix, list key studies and add core details. Like we should make a list and make author, like this first author Smith and the year, and then the topic, and then they have used what kind of methods and what are their findings, what are their gaps, limitations, problems, and then what is the useful things. We should make this from the different studies, fill it consistently. We should keep the criteria of shortlisting the paper throughout all the paper we have downloaded or selected should be the same. Like we should find these things. If anything from these is missing from any paper, we should not consider that. Use it to build like sections and the arguments, and after that we can make different sections from these tables, and we can start up the writing a review paper. So this is your practical activity. You are not doing practical activities. I am really disappointed that the youth of Pakistan is not active, and they are very lazy, and how to say, they don't like to work hard. Like in Urdu, we say kamjor. So I'm really disappointed that future of Pakistan is not in safe hands. So you should summarize 3 articles and write their summary, 1 comparison table as given above, and 1 quality checklist, a thematic grouping. You can take picture of the slide, a literature matrix according to previous slide, a mini outline. Then you can send me email, LinkedIn, or WhatsApp, or you can present in this meeting on tomorrow. So this is the previous slide to find the matrix and how to make a list. So you can also take the picture of this slide. So I will stop and take your questions just after 1 minute. Just hold on. I have to take some water because I cannot speak further.
So I have seen some question in comments. First, I will answer them. Can you please repeat benchmark? Benchmark is something greater that is never produced or among the highest produced results, or it is something new that new innovation that have make a remarkable achievement. What is the supplementary? Supplementary information is some PDF or Word file that have, if you are studying some literature and it is shown that this information is given in figure S1, like it is supplementary information, not in the main paper. So when you are going to download the paper from journal's website, the supplementary information is also available there. You can see on the left or right side of the paper, online page of the journal where the paper is presented. And may I know the browser or software? I am using PDF Reader, like its name is, I think, PDF Exchange Editor. It is a paid software, not a free software, so you cannot use uh, because I have purchased it. For the Microsoft soft documents, you can use Microsoft Office. Okay, now I'm going to take your questions. First, you can ask the question in the comment, or you can ask the question on mic. So you are welcome to ask the question. And if someone is want to discussing about their study or the assignment or what they have learned until now and their conclusion, you are welcome. And any question about today's studies, today's lecture. Today's assignment, I will share in the WhatsApp group. When we look a graph and image in a paper, they also have values. So uh, how do we explain them? Do we have the explanation detail of all those values? Or do we just say that we interpreted of using those techniques? No, if you are writing a review paper and take the information from the figures and tables and some other things from a paper, then you should use the explanation that is discussed in that paper, that how these figures are, what they are telling, and what is the result of them. And then you should also, because it is not about one paper, you are discussing different papers. So in discussion, you should say that what is either this is good than previous one, and how about the next, and you can make a comparative study in this scenario. So you don't need to add things by yourself. Yes, if you have good abilities, you should not take their discussion. You should discuss like them with the same results, keeping the same analysis but different words, using your own words. So this will also help you to reduce the plagiarism. And any other question? Someone want to ask on mic or not? If someone has taken the picture of the assignment, please share in the WhatsApp group. There are more than 70 students and no one is asking the question, has everyone got my all the presentation? Let me know, please. If you have get all the points what I have explained, then I should ask them, you people, that either you have learned or not. Yes, after 2 weeks, anytime you can send
a message on email. No problem. Okay, let me ask the question from some random participants that what they have learned. Okay, so I will ask Ali Mujtaba. Can you please open your mic? Ali Mujtaba, I think you cannot listen me. Ahsan Mahmood, are you there? Can you hear me? Ahsan Mahmood. Okay, open your mic. I want to ask some question from you. Signal issue. This is the same when I was studying Chinese language and I was in Pakistan, and when the teacher asked the question and I was just just absent. Maybe sometime I used to turn off my internet or my mic, and I said, teacher, I have no internet. I am living in very backward area of Pakistan, and on the same time, I was just sitting under the tower of the communication company. So, Ahsan Mahmood, you should turn on your mic and let me know that how we should study a paper. What parts of a paper should be studied? Ahsan Mahmood, please. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, आप उर्दू में बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। जी जी सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन read out the parts of topic, main topic, our main topic of research articles. Abstracts read out first of all. सर उसमें हम लोगों ने रीड करना होता है मेन पॉइंट ऑफ द ऑथर्स, और उसके बाद मेन प्रॉब्लम्स ऑफ द आर्टिकल्स जो उसने एक्सप्लेन किया होता है अपने एब्स्ट्रैक्ट्स के अंदर। सर उसके बाद हम लोगों ने उसके बाद जो है इंट्रोडक्शन पार्ट जो है क्योंकि इंट्रोडक्शंस के अंदर उसने समराइज किया होता है अपना जो एक्सपेरिमेंट वर्क होता है, तो सर उसको भी रीड आउट करना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद सर हम लोगों ने मेथड, उसके अंदर मेथड्स देखने होते हैं, एडवांस मेथड्स हैं या फिर कोई ऐसी टेक्निक्स हो जो एडवांस लेवल के ऊपर हो। एग्जैक्टली, वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, और इट मींस कि आपने जो हमारी प्रेजेंटेशन है, यू हैव लर्न वेरी वेल एंड यू आर पेइंग मच अटेंशन। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। आई एम श्योर दैट one day you will become a good researcher. Yes, Usman Raza, you can explain. अस्सलाम वालेकुम सर जी। हेलो, वालेकुम सलाम। यस 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 सर जब पेपर को ना मैं हमेशा स्टडी करने से पहले 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेता हूँ। एक उसका अब्स्ट्रैक्ट, और सेकंड जो है ना हम इंट्रोडक्शन का जो लास्ट पार्ट होता है ना, एक वो, और तीसरा जो फिगर्स होती है ना, फिगर्स, और उसके साथ उसकी जो मेथोडोलॉजी, अगर वो एक्सपेरिमेंटल वर्क है तो हम उसकी एक्सपेरिमेंट मेथोडोलॉजी, सिंथेसिस मेथड देखते हैं, और अगर वो कंप्यूटेशनल पार्ट है तो हम उसके कंप्यूटेशनल स्टडी देखते हैं कि उसने कौन से मेथड के साथ कंप्यूटेशन की हुई है ना, क्योंकि हर पेपर में जो डिफरेंट चीज़ होती है, यो या तो वो उसका सिंथेसिस प्रोसेस डिफरेंट होता है, या अगर कंप्यूटेशनल है तो उसका कंप्यूटेशनल मेथड थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। अब सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट पढ़ने की रीज़न क्या होती है? उसकी रीज़न ये होती है कि हमें उसके 3-4 लाइनों में पता चल जाता है कि उसने स्टार्ट क्या किया है, उसका मेथोडोलॉजी क्या है,
और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और उसने हासिल अचीव क्या किया है, मतलब उसकी कितनी एफिशिएंसी आई है उसके वर्क के अंदर। ठीक हो गया। और और उसके इंट्रोडक्शन के लास्ट पैराग्राफ के अंदर या उससे सेकंड लास्ट पैराग्राफ के अंदर उसके हमारे पास उसके रिसर्च गैप दिए होते हैं ना, हर रिसर्च एक अच्छा रिसर्च वर्क के अंदर कि उसका रिसर्च गैप क्या है, तो उसने किस लिहाज से उस रिसर्च गैप को फॉलो करते हुए उसने कौन सा मेथड यूज किया, वो अपने हर इंट्रोडक्शन के लास्ट पैराग्राफ के अंदर ये एक्सप्लेन करते हैं। क्योंकि आगे उसके बाद आता है रिजल्ट एंड डिस्कशन पार्ट। रिजल्ट एंड डिस्कशन पार्ट में हम पूरी थ्योरी को तो नहीं पढ़ सकते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसकी फिगर्स को एनालाइज करते हैं कि आया कि वो फिगर्स के अंदर क्या क्या चीजें कर रहे हैं ना। तो अगर वो फिगर्स हमारे पास सही हैं तो हम उसके रिजल्ट एंड डिस्कशन पार्ट को मजीद ब्रीफली स्टडी करते हैं। अगर वो हमारे काम की जो फिगर्स हम मतलब कि जो फिगर्स हमारे काम की है ना, हम उसके मुताबिक उसको ज़्यादा स्टडी करते हैं, बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है ना हम छोड़ देते हैं। ये एक मेरा तरीका है किसी भी रिसर्च पे। That is really good. I think that is really good approach to study a research paper, and your what you said is very good, and I'm really impressed from your knowledge. I wish you all the best. Javedi Afzal has asked something. Sir, you teach us theoretically. If you show us the practical side, everyone will get interested. So let me know, how can I tell you the practical side of the literature? You guys are not making the assignment very well. Today I have find the maybe 10 email from 100 students, and students are not taking it serious. You have to do the practical, and then if you will submit your assignment more than 20 or 30, I will open them online here in front of everyone, and I can tell you that is it okay or not, and where you have problems. I cannot write a review article online here with you guys in only 5 classes. And I think your question is not valid because you said that your supervisors are teaching you theoretically. They are teaching you experimental things theoretically. Like if you are a science student and you are studying the things in the air, like in the Urdu we say hawa mein baatein karna. So I think this is a different thing, and the writing skills in even in our university. I'm studying in the top 30 from one of the top 30 universities of China, and here we have a major course and compulsory course of thesis writing and research article writing. And even the teacher explain on the slides, they don't tell us the things like practically, because the writing thesis paper or review article is quite time-taking thing. It is not cannot be covered in 5 classes. So I think you have got my point. Sir, how to write the literature critically rather than just listing them. Critically, for the critical analysis, you have to make the tables and figures from different, you take the figure from different literatures and papers and then combine them. And you should explain that this result is higher or less than this, and why this is this is happening due to which phenomenon, which problem. So this will lead you to have a good idea about the critical analysis. Yes, Asan, you can ask the question. सर प्रॉब्लम ये है कि जब हम लोग एक आर्टिकल्स को रीड कर रहे होते हैं या एक रिसर्च पेपर को रीड कर रहे होते हैं, तो सर उसमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही होती कि जब हमें उसका मेन आइडिया भी समझ आ जाता है, उसके मेन पर्पस भी समझ आ जाते हैं, उसके बाद जो रिसर्च गैप होता है सर, वो बेसिकली हम लोग उसको किस तरह ओवरकम कर सकते हैं या उसको किस तरह एनालिसिस उसका कर सकते हैं। रिसर्च गैप को हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, या हम रिसर्च गैप जो प्रॉब्लम है उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? जी सर, उसको किस तरह ओवरकम कर सकते हैं। हाँ, अगर आप एक रिसर्च करना चाह रहे हैं, उस रिसर्च गैप को आप फोकस करके, तो उसके लिए ये है कि आपको मतलब देखें, आप जैसे मैं अपने पेपर में मैंने ये चीज एक्सप्लेन की है कि लाइक आपका मेजर क्या है? सर मेरा मेजर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है।
हाँ सेम, कैटालिसिस। मेरा केमिस्ट्री कैटालिसिस है। तो इसमें ये जो बेसिक चीज ये है कि अब मैं कैटालिसिस में फोटो कैटालिसिस पे काम कर रहा हूँ। तो फोटो कैटालिसिस में जो मेन चीज होती है वो चार्ज ट्रांसफर होता है, कि इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स में सेपरेशन, एंड देन कैटलिस्ट की जो होती है ना, द स्टेबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट, इट इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग इन कैटालिसिस। सो I use different techniques like in semiconductors, or and we go deep, more narrow and deep. Then we will focus on sulfide semiconductors, and we can see that they have photo-collision problem, like they are making the sulfides during the reaction, photocatalytic reaction. So to overcome this, I have used metal organic framework, polyoxometalates, combined with semiconductors through different methods. Like I have used organic linker between semiconductor and the polyoxometalate, which lead them to make an electrostatic force. So this improved my uh, performance stability of catalyst, and it doesn't go under the photoclusion. And the other thing, the organic linker plays a role of charge transfer. It increased the electron transfer to the co-catalyst to improve the reaction ability. So through, because you have to think with your mind that this research gap, this problem that one researcher is facing, how I can overcome that and publish and through my research. And you can also see some papers that have overcome that kind of problems. At some extent, you can improve by using the same techniques, or you can modify maybe in the methods and some other things. Sir, one more question. Yes. Sir, one more question. सर बेसिकली जितने भी हमारे पास फोटो कैटालिसिस होते हैं, लाइक सर ट्रांजैक्शन मैटर जो होते हैं, ट्रांजिशन मैटर जो होते हैं सर, इनके अलावा जो मैटर्स हैं पीरियोडिक टेबल्स के अंदर, वो भी एज अ फोटो कैटालिसिस यूज हो सकते हैं या नहीं हो सकते? लाइक ट्रांजिशन मेटल्स के अलावा नोबल मेटल्स भी होते हैं, लेकिन नोबल मेटल्स का ये है कि वो एक्सपेंसिव होते हैं। लाइक जैसे ये रुथीनियम हो गया, इरिडियम हो गया, लाइक अदर, ये इनका जो है ना, गोल्ड हो गया, ये यूज होते हैं, प्लाटिनम, ये सारे कुछ यूज होते हैं। बट ये काफी एक्सपेंसिव हैं। तो क्योंकि रिसर्च जो होती है ना, उसमें जो मेन चीज होती है वो कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए, और उसको जो है ना रियल लाइफ में एप्लीकेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिवनेस वाला फैक्टर खत्म हो जाता है कि हम एक महंगी चीज लेके, अब महंगी चीज का तो वो पंजाबी में कहते हैं ना कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा, तो ये फिर उस हिसाब में चला जाएगा। तो सो हम यही मेटल्स यूज करते हैं, लाइक कैडमियम, जिंक, मैंगनीज, निकल, टाइटेनियम, एंड इस तरह की और दूसरी जो है, लाइक आप देख लें, जीडी हो गया। इसके अलावा और आयरन आयरन यूज होता है, कॉपर यूज होता है, कोबाल्ट यूज होता है। तो अगर किसी और का क्वेश्चन नहीं है तो आई थिंक वी शुड क्लोज टुडेज प्रेजेंटेशन। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर जी, मैंने ये पूछना था कि जब हम रिव्यू आर्टिकल लिख रहे होते हैं ना, तो उस वक्त हम जब फिगर्स ड्रा करते हैं एक्सपेरिमेंटल वर्क में, जो हमारे पास सैम की फिगर्स होती हैं या कैम की फिगर्स होती हैं, उसको समराइज करके हम क्या करते हैं, एक वो उसका कंक्लूजन बना के उसको लिखते हैं ना पैराग्राफ के अंदर। तो जब हम अक्सर रिव्यू पेपर के अंदर लिखा होता है कि कॉपीराइट, और कुछ में जस्ट रेफरेंस लिखा होता है। अब हम जो कॉपीराइट लेते हैं वो किस तरीके से लेते हैं? वो हर बंदा जो है ना, हमें यही कह देता है कि आप कॉपीराइट लेंगे तो आपका पेपर एक्सेप्ट होगा, कॉपीराइट लेंगे तो एक्सेप्ट होगा। अब मुझे समझ एक्सप्लेन। नहीं आई कि हम कॉपीराइट कैसे लेते हैं, ओके, आपको क्योंकि हम उर्दू फॉर एग्जांपल उर्दू मेल में करते हैं एक्सप्लेन ना, करूँ या और इंग्लिश तो में? सर उर्दू में कर देंगे वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा चलिए। अच्छा, ये इस तरह है कि कॉपीराइट जो होता है ना, आप जब कोई भी पेपर किसी जर्नल की वेबसाइट से ओपन करते हैं तो उसमें ना एक ऑप्शन होता है परमिशंस का। ठीक है। जी
आप वो परमिशंस का ऑप्शन लेके तो आप वहां पे क्लिक करते हैं, वहां से एक फॉर्म आ जाता है, आप उसको फिल करते हैं कि हम इस पेपर को, हमारा ये पेपर है, हम लिख रहे हैं, तो हमें उसमें ना आपके ये पेपर की हमने परमिशन जर्नल से लेनी होती है। तो हमने जी ना जी ये चीज हमने ना ये चीज यूज करनी है। जी जी। तो उसमें वो फिर आप जब उसको फिल करके अपनी ईमेल वगैरह, कॉन्टैक्ट यूनिवर्सिटी नेम सारा कुछ बताएंगे उनको, तो वो फिर जी जब आप सेंड करते हैं तो वो जर्नल, कोई भी जर्नल हो ना, उनको साइटेशन चाहिए होती है। जर्नल की रैंकिंग हमेशा साइटेशन की बेस पे होती है। तो उनको जब जी। साइटेशन चाहिए होंगी तो वो 100% आपको परमिशन देंगे, और वो आपको परमिशन लेटर जो होगा ईमेल के थ्रू आपकी मेल पे आ जाएगा। और आप जब पेपर सबमिट करने लगेंगे तो आप वो सारे जितने भी आपने डिफरेंट उधर से लिए होंगे ना परमिशन लेटर्स या कॉपीराइट के लेटर्स, जी जी। कॉपीराइट परमिशन, तो वो आप उसमें साथ अपलोड करते हैं, तो वो फिर हो जाता है उसका। कोई इतना मसला नहीं है, तो एक नॉर्मल सी चीज है। सही सर, हमें तो बताया गया था कि वो जर्नल को मेल, नहीं जर्नल को सॉरी, वो ऑथर को मेल करो, वो आपको परमिशन देगा, ये वो। देखें, जो अच्छा। पेपर होता है ना वो ऑथर की प्रॉपर्टी नहीं होता। वो जब पब्लिश हो जाता है तो वो जर्नल की, उसके तमाम कॉपीराइट्स जर्नल के होते हैं। क्योंकि जब पेपर पब्लिश होता है ना, रिसर्च पेपर, तो जी जब एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट होने के बाद वो आपको मेल करते हैं कॉपीराइट ट्रांसफर की। तो उसमें हम जी जी। क्लिक करके अपने साइन के साथ उधर लिखते हैं कि ऑल द राइट्स आर ट्रांसफर टू दिस दिस जर्नल फॉर दिस पेपर। सही 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 सही। बाकी सर मैंने ये कहना था कि जब हम रिसर्च आर्टिकल से फिगर्स लेते हैं ना, सैम डैम की या ग्राफ जो बने होते हैं, तो उनकी रेजोल्यूशन बहुत कम हो जाती है। तो उनकी रेजोल्यूशन को इंक्रीज करने के लिए या उस फिगर को रीड्रॉ करने के लिए हमें यूजुअली कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए? देखिए, सेम की फिगर आप रिड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि वो आप दोबारा कैसे नहीं करेंगे, वो तो एक, नहीं, रीड्रॉ नहीं, मतलब कि हम उसकी रेजोल्यूशन को हाँ इम्प्रूव मैं करने आपको के लिए बताता हूँ या ना, उसकी उसका ग्राफ रेजोल्यूशन बनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल 600 DPI में तो नहीं आएगी। लेकिन अगर आप डायरेक्टली PDF की बजाय ना डायरेक्टली जर्नल की वेबसाइट पे क्लिक जाएंगे ना, तो वहां पे फिगर पे क्लिक करेंगे तो वो फिगर के साथ नीचे ऑप्शन होगा कि सी हाई रेजोल्यूशन इमेज, उस पर क्लिक करेंगे तो वो जो है ना वहां पे शो हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास जब एंड होगी ना, तो अगर आप क्लास में हो तो आपने मुझे बताना, मैं आपको वो करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली यहाँ पे ना, कि आपने हाई सही रेजोल्यूशन इमेज कैसे डाउनलोड करना है। सही 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 सही। हम्म। ठीक हो गया सर जी, बहुत शुक्रिया। ओके। बाकी फॉर एग्जांपल ये होता है ना कि हम सिंथेसिस मेथड पेपरों के अंदर होते हैं, तीन चार रिसर्च पेपर हम पढ़ते हैं, तो हमें लगता है कि यार ये एक मेथड जो है ना, मॉडिफाइड मेथड, तो हम कहते हैं कि यार ये एक मेथड बहुत अच्छा है, तो हम ना इसे अपने रिव्यू पेपर के अंदर एक्सप्लेन करते हैं कि इस मेथड के थ्रू अगर हम फिगर्स बनाएंगे ना, कोई मेथड यूज करेंगे, तो वो हमारा मेथड जो है ना किसी भी रिसर्च पर्सन के लिए या सिंथेसिस प्रोसेस के लिए अच्छा होगा। तो उसे अगर हमने मॉडिफाई, मतलब मेरे कहने का ये है कि अगर तीन चार पेपरों का एक मॉडिफाइड मेथड हमने की फिगर्स बनानी हो, तो उसके लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे फिगर्स बनाने के लिए, जो यूज करते हैं यूजुअली? फिगर्स मतलब फिगर्स को कंबाइन करने के लिए मैं तो हाँ मोस्टली जी कंबाइन बिल्कुल। करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 इंस्टॉल करें, और हाँ उसको ना जो है ऐसे होगा कि उसमें जो है ना एक सेटिंग करनी पड़ती है। उसमें 600 DPI में इमेज सेव होते हैं। फिर उसमें जब सेव करके हम उसको कंबाइन करते हैं तो उसमें जो है ना उसकी रेजोल्यूशन खराब नहीं होती, ठीक है। हम्म, और उसके अलावा आप कैनवा यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कैनवा का हम्म, प्रो वर्जन यूज करना है, नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं फ्री वाला, लेकिन उसमें भी फ्री वाले में फिर उसकी जो है ना वो कम हो जाती है रेजोल्यूशन। उसके बाद हम्म, आप एडोब फोटोशॉप के ऊपर भी कंबाइन कर सकते हैं, बट वो थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होगा, आपको वो सीखनी पड़ेगी। हम्म, बाकी माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर जो है ना पावर पॉइंट होता है, मतलब पूरा पैकेज होता है, उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, हाँ टीम, जी सारा हाँ जी कुछ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एट द एंड ऑफ सेशन जो हमारे टॉप 5 स्टूडेंट्स होंगे उनको मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पेड अकाउंट प्रोवाइड करूंगा अपनी तरफ से। सही। हम्म। सर वो ना पावर पॉइंट हम यूज तो करते हैं ना, लेकिन जब वो मतलब कि कॉपी करके लाते हैं ना फिगर्स को, तो उसमें एक एक चीज हम उठाते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल एक में हमने वो मटेरियल उठा लिया, एक में हमने सेंट्रीफ्यूग मशीन उठा ली, एक में से हमने फॉर एग्जांपल वो ओवन उठा लिया। तो इस जी तरीके से जी। जब वो चीजें कंबाइन करते हैं ना, तो वो उसकी फिर ज़ाहिर है वो उसको हम स्नैपिंग टूल के थ्रू या स्क्रीनशॉट लेके नहीं नहीं, लाते हैं। आपने नहीं 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 स्क्रीन शॉट नहीं लेना। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आपने उसको जो है ना वहां से डाउनलोड करना है पिक्चर को जर्नल की वेबसाइट से। जी। मैं आपको मेथड बताऊंगा नेक्स्ट उसमें ना। आर सही। स्टूडियो, किसी ने कहा आर स्टूडियो जो होता है ना वो फिगर्स
डाउनलोडेड फिगर्स को कंबाइन करने के लिए आई थिंक नहीं यूज होता, वो तो एनालिसिस के लिए यूज होता है। हाँ जी। अच्छा, एक स्टूडेंट ने लिखा है कि सर मैं सारा पेपर पढ़ लेती हूँ, समझ भी आ जाती है, बट रिसर्च गैप नहीं फाइंड कर पाती, प्लीज इसके बारे में गाइड कर दें। अच्छा, सारा पेपर पढ़ने के बाद आपको ये नहीं पता चलता कि इसमें जो मेन प्रॉब्लम है वो क्या है। लाइक आप इंट्रोडक्शन पढ़ें या जो है ना वो पढ़ें, स्टार्ट में जो होता है एब्स्ट्रैक्ट, तो वहां पे बताया होता है कि टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम, जहाँ पे ये लिखा है टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम या टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम, या टू या बताया हो कि द चैलेंजिंग या चैलेंजेस या इस तरह के वर्ड जहाँ पे यूज हो, तो वो आपका जो है ना वो होता है। सर जी इसके अलावा ना इसका एक आसान तरीका ये भी है ना कि फॉर एग्जांपल आपको रिसर्च कैब का पता नहीं चल रहा, तो उसका तरीकेकार ये होता है कि जो भी आप इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़े ना, उसका जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ होता है ना, एग्जैक्टली जो exactly. कोई भी रिसर्च 90% पेपर पढ़े तो जर्नल जो होते हैं ना, वो उसमें एक्सप्लेन करते हैं कि आपका जो है ना एग्जैक्टली हमारा ये रिसर्च वर्क है और इसमें ये गैप था, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए ये मेथड यूज कर रहे हैं। ये जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ और लास्ट पैराग्राफ जो होता है ना हर रिसर्च पेपर का, उसके अंदर ये चीजें एक्सप्लेन होती हैं। तो उससे आप अगर ब्रीफली पढ़ोगे ना अंडरस्टैंडिंग के साथ, वो आपको समझ आ जाएगी कि हमारा एक्चुअली इसके रिसर्च गैप क्या है और वो करना क्या चाह रहा है। उसामा, आप कौन सी स्टडीज कर रहे हैं, एमफिल, पीएचडी, मास्टर, सर बैचलर्स? मैं पीएचडी कर और कौन सी यूनिवर्सिटी से? रहा हूँ इधर वुहान यूनिवर्सिटी से। हाँ, आप चाइना में, केमिस्ट्री में। जी जी। अच्छा, तो कौन सा ईयर है आपका? मेरा सर थर्ड ईयर है। फिर तो हम सेम है। हाँ जी। तो हम मुझे सर क्यों कह रहे हैं? सर वो आप जाहिर है आपसे सीख रहे हैं तो सारे ही। नहीं नहीं, हम तो हाँ। सेम है। तो आपका मेजर फिजिकल केमिस्ट्री है? हाँ जी फिजिकल केमिस्ट्री सर, मैं वाटर का। सही सही। हाँ जी। ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम उसामा। अच्छा, इसके बाद हमजा ने कहा कि मेरी अटेंडेंस अच्छा, आपकी अटेंडेंस हो गई है, क्वेश्चन ना पूछिएगा। सर प्लीज बता देंगे क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिटरेचर कैसे लिखें जस्ट समराइज करने की बजाय। तो क्रिटिकल एनालिसिस में आप ये लिखें ना कि ये जो टेक्निक्स यूज हो रही हैं इनमें से कौन सी टेक्निक बेटर है, सबको कंपैरिजन करें। कंपैरिजन के बाद एंड पे आप बताएं कि कौन सी टेक्निक जो है ना वो सबसे अच्छी थी इस सारे आपके रिव्यू पेपर में। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? Okay, some students have shared the assignment for next meeting. You can submit on Monday or tomorrow, but I will suggest you to learn something. Otherwise, it is useless to waste your 1 hour or 2 hour daily. So we will have two more classes. One is tomorrow सर and one is yes. सर काइंडली असाइनमेंट जो है वो दोबारा बता दें। आप ग्रुप में हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में हैं? सर कौन से वाले में? एक मिनट, मैं इधर ही शेयर कर देता हूँ यार। इधर पिक्चर हो जाएगी शेयर? जी सर, आप स्क्रीन ऑन करके शेयर कर दें और मैं स्क्रीनशॉट ले लेता रुके, मैं ना स्क्रीनशॉट लेके इधर शेयर करता हूँ चैट में। आई थिंक पिक्चर यहाँ पे सेंड हो जाती है चैट में। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आप ये यहाँ से ना इसको कर लें। शो हो रही है स्क्रीन? जी सर, अब स्क्रीनशॉट हो गया। ओके 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 ओके। एक और स्टूडेंट का क्वेश्चन है कि वी आर लर्निंग बट वेदर इश्यूज आर इन पाकिस्तान नोडेज। यस, पाकिस्तान में बारिशें हो रही हैं और गर्मी भी है। सर पावर पॉइंट वाली चीजें सिखा दें प्लीज। पावर पॉइंट वाली कौन सी चीजें आपने सीखनी है? पावर पॉइंट में तो काफी सारी चीजें होती हैं। केमिस्ट आपका नाम क्या है? काइंडली अपने रियल नाम से आया करिए, मैंने काफी टाइम रिपीट किया फिर सर्टिफिकेट्स में इशू होगा।
रेजोल्यूशन इन्हांस करना, मर्ज करना। बिकॉज आई होप कल हमारा लेक्चर जो है ना, ये कोर्स खत्म हो जाएगा, और जो लास्ट डे मैंने ट्यूसडे वाला दिन रखा है ना, उसमें हम यही चीजें देखेंगे, जो आपके क्वेश्चंस होंगे और जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं राइटिंग में, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। Any other question from any other participant? उसामा, अगर आप चाइना में हैं तो आपके लिए तो यूनिवर्सिटी एक्सेस का मसला नहीं होगा। लाइक आपको तो यूनिवर्सिटी की ईमेल मिली होगी, आप उससे लॉग इन करके पेपर को ऑनलाइन रीड कर सकते हैं ना। तो ऑनलाइन रीड करते हुए आप उसको वहां से हाई रेजोल्यूशन में डाउनलोड कर सकते हैं, आप देखिएगा करके। चलें, सही है सर जी। मुझे ना मेथड का नहीं पता था, अब मैं करूँगा, क्योंकि जी मैं जी एक पेपर बिल्कुल। पे काम कर रहा था ना, तो ये मेरे साथ इश्यू हो रहा है। तो मैंने तो काफ़ी लोगों से कंसर्न भी किया, तो आज मुझे पता चला है कि वो इस तरीके से होते हैं। यस, ऐसा ही है। मैं मुझे भी रिसेंटली एक रिव्यू की इनविटेशन आई थी एक अच्छे जर्नल से, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। तो मैं हम्म, ये चीज़ें देख रहा हूँ, तो इसलिए मैंने आपको फिर बता दिया कि जर्नल पे ये चीज़ हम्म, अवेलेबल होती है। सही सही सही। क्योंकि सर मुझे तो सर ने यही कहा था कि हर आप जर्नल को मेल, सॉरी, जर्नल को ऑथर को मेल करें, वो आपको परमिशन देगा, ऑथराइजेशन एक लेटर देगा, तो फिर आप उसको साइड कर सकते हैं। लेकिन वो आपने बताया कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं जिस भी हम्म। ऑथर को मेल करता था ना, उसका रिस्पॉन्स ही नहीं आता था। नहीं नहीं, ऑथर्स कहाँ रिस्पॉन्स करते हैं? इवन मोस्टली हाँ, पेपर्स चाइनीज के होते हैं, वो तो रिस्पॉन्स नहीं करते। हाँ जी। सर अभी क्योंकि रिसेंटली मैंने एसीएस से सोसाइटी जो है ना वो ज्वाइन की है, हम्म तो सर उन्होंने मुझे एसएस दी है साइन फाइंडर की। हम्म। तो सर उसमें भी यानी कि हम लोग डायरेक्ट जो है वो हाई एससी रेजोल्यूशन फाइंडर जो में, हाँ। पिक्चर नहीं, एससी पिक्चर फाइंडर में आप डाउनलोड। नहीं कर सकते। नहीं नहीं, एससी फाइंडर एक डेटाबेस है जिसमें पेपर आते हैं, लाइक गूगल स्कॉलर ना। तो उसमें आई जी थिंक इस तरह नहीं होते अवेलेबल पेपर आपके पास। हाँ, अगर उन्होंने आपके पास जो ना वो एसीएस के आपके पास मेंबरशिप है, तो आप उस ईमेल के साथ पेपर को एक्सेस कर सकते हैं। जस्ट एसीएस वाले, बाकी जर्नल्स वाले में भी आप नहीं कर सकते होंगे। जी सर, बिल्कुल ऐसी बात। जी वाजिद, लेक्चर्स मिलेंगे इंशाल्लाह उसमें, जो है ना, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। इसके अलावा केमिकल सोसाइटीज कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? केमिकल सोसाइटीज की वेबसाइट पे जाके मेंबरशिप में। एंड सर, आई डिडंट मीन दैट, आई वाज जस्ट सेइंग दैट कीप इन माइंड द स्टूडेंट्स करंट सिचुएशन, बिकॉज न्यू स्टूडेंट माइंड्स आर सो मेस्ड अप, they don't understand anything. Yes, I know, and I have let them to write the assignments and their questions to me on email, on LinkedIn, either on WhatsApp group, so we can have a discussion if they are facing anything, but I cannot do it practically. And for the writing skills, some students have to take paid courses, otherwise learning all of this on your own takes a lot of time. This is my second or third time I am giving lecture on the research writing. So we are not taking a single penny from any student. Any other question? लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मिलेगी, जो आई थिंक नेक्स्ट वीक में ना। अभी हमारे बाकी मेंबर्स थोड़े बिजी हैं, और मैं अकेला हैंडल कर रहा हूँ, तो इसलिए ना थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे लेक्चर प्रिपेयर भी करना होता है, अपनी चीज़ें भी देखनी होती हैं, तो इसलिए। Any other question from anyone? What is the assignment? वाजिद, अभी हमने शेयर की है स्क्रीन, तो
मैं दोबारा कर देता हूँ, चलिए आप ये ना स्क्रीन से स्क्रीनशॉट ले लें काइंडली। ये आप ये स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? स्लाइड नंबर 3, स्लाइड नंबर 10, स्लाइड नंबर 10 में ये पीपीटी जो है ना, ये भी प्रेजेंटेशन जो सारी पावर पॉइंट की फाइल सारी सारे डेज की जो प्रेजेंटेशन होंगी वो भी ऑनलाइन हम आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे।